नमस्कार, जियो स्टांस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से हमें जॉइन किया है तिलक देवेशर जी ने। आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं, पाकिस्तान पर 4 किताबें लिख चुके हैं। आज तिलक जी से हम बात करेंगे अफ़गान रिफ्यूजीज़ का जो इश्यू चल रहा है पाकिस्तान में, उसके बारे में। सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर, एक बार फिर से जॉइन करने के लिए। Thank you so much, Sonam ji. Pleasure to be on your show always. So thank you very much for calling me again. वेलकम सर। तिलक जी, अक्टूबर 7, 2023 के बाद से दुनिया भर की जो नज़रें हैं वो मिडल ईस्ट की तरफ हैं। जबकि हमारी बगल में पाकिस्तान में एक अलग ही तरह का एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो उभर रहा है। और अक्टूबर 3 को इस साल पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक चीज़ डिक्लेयर की कि अक्टूबर एंडिंग तक जितने पाकिस्तान में अफ़गान लोग रहते हैं वो निकल के चले जाएँ यहाँ से। और अभी तक लाखों लोग जो हैं वो ऑलरेडी चले गए हैं और बहुत लोग हैं जिनकी लाइव्स अभी भी इम्पैक्टेड हैं, कोई कहीं रह रहा है एंड दे आर ऑल डिस्प्लेस्ड। 2 चीज़ें हैं जो मेरे ज़हन से गुज़र रही हैं। एक तो ये कि दुनिया की अटेंशन बिल्कुल इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की तरफ क्यों नहीं है? दूसरी ये कि क्या ऐसा बैड ब्लड है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कि इस नौबत पर पाकिस्तानी आ गए हैं कि वो ये भी नहीं सोच रहे कि इतनी ठंड है अभी और अफ़गानिस्तान के पास तो कोई ऐसे कोई प्रोविजंस भी नहीं है वहाँ की गवर्नमेंट के पास कि इतने सारे लोगों को एक साथ रिहैबिलिटेट किया जाए। दे नो कि इनकी ज़िंदगियों को जेपरडाइज़ कर रहे हैं, बावजूद इसके इतना रुथलेसली छोटे-छोटे बच्चों को, ख़वातीन को और इतने सारे वल्नरेबल लोगों को पाकिस्तान ने एकदम से डिसाइड किया कि इनको वापस भेजना है। क्या उसके रीज़न्स हैं? तो इसमें दो चीजें, एक तो फर्स्ट फेज जितने भी वो कहते हैं अनडॉक्यूमेंटेड और इलीगल अफगान जो हैं विल बी सेंट बैक। सारे अफगान अभी तक नहीं। पाकिस्तान में कोई अबाउट 4 मिलियन के करीब अफगान हैं एस्टिमेटेड। उसमें से 1.7 मिलियन आर undocumented or what they say illegal. There are another about 1.4 जिनके पास proof of identity का cards हैं, and another 8,000 जिनके पास citizenship certificate. So these second two categories are not affected yet, though I suspect, and I think बलूचिस्तान के मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि जनवरी के बाद इनको भी हम वापस भेज देंगे. So there are these three categories of Afghan. And you're very right, क्योंकि मेरे ख्याल recent times में this is the largest forced migration. 1.7 million people को आप एक देश से निकाल के दूसरे देश भेज रहे हो. This is, hasn't happened in recent times. इतनी तादाद में लोगों को आप वापस भेज रहे हो. And even though Pakistan is protesting about Palestine, उनके demonstrations हो रहे हैं, protestations हो रही हैं, उनके बैकयार्ड में जो हो रहा है मुस्लिम ब्रदर्स, उसके बारे में बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है. There are a few articles, few people have protested and things, but by and large as compared to जो पैलेस्टाइन के बारे में या कश्मीर के बारे में जितना वो उछल उछल के बोलते हैं, nothing about these poor Afghans. So this is a very strange thing. और इसका रीजन ये है कि over the years, you recall कि 79 में जब सोवियत had invaded Afghanistan, so the first big wave came. Of course, people had come, even देखो लोग भूल जाते हैं. Actually, Afghan started coming in 1973. जब Dawood had cracked down on the Islamists and Bhutto received them, trained them and sent them back into Afghanistan to create uprising. That was so 79 में जब ये आए, they were called Muhajirin, and those fighters who were going back to fight were called Mujahideen, holy warriors, because पाकिस्तान को पैसे मिल रहे थे, अपनी फॉरेन पॉलिसी के प्रोजेक्ट कर रहे थे कि they got a seat on the high table. तो उनकी बड़ी प्रेस्टीज मिली और पैसे खास तौर से मिले. तो उन्होंने उनको बहुत सर पे चढ़ाया, मुहाजिरीन और मुजाहिदीन कह के. अब 20-30 साल के बाद लाख कोई पैसे हैं, अब ये उनके पास रहकर उनसे कोई फायदा नहीं उनसे, तब उनको कहते हैं कि ये टेररिस्ट हैं, दे आर सपोर्टिंग टेररिस्ट, दे आर फैसिलिटेटिंग
टेररिस्ट, और पाकिस्तान में जो क्राइम बढ़ रहा है उसके पीछे ये अफगान है। हालांकि इंटरेस्टिंगली देयर इज अ रिपोर्ट ऑफ द पाकिस्तान लॉ कमीशन 2018 की रिपोर्ट में देख रहा था, उसमें वो कहते हैं कि द नंबर ऑफ अफगान्स इन्वॉल्व्ड इन क्राइम are 6 per 1 lakh, whereas the number of Pakistanis involved in crime are over 40 per lakh. तो क्रिमिनल कौन है, पाकिस्तानी है या अफगान? बट एक तरह से माहौल क्रिएट कर दिया कि ये टेररिस्ट हैं, ये स्मगलर्स हैं, ये ऑल काइंड ऑफ नेफेरियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है. So that is also one of the reasons why the Pakistani people have not really reacted so much on this. और दूसरे जिस टाइम में जो भेज रहे हैं, आप यू वेरी राइट, बहुत शदीद winter. Afghanistan itself, economy is in a poor condition. 15 million people face malnutrition or hunger अफगानिस्तान के अंदर. उसके आप में 1.7 मिलियन लोग और भी थे. और आप जहाँ विमेंस एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन बंद है, working of women is prohibited. So you're sending them back at a very, very unfortunate time. और पाकिस्तान इसको जानबूझ के किया. We can discuss this further, why it has done so at the moment. तो जैसे मैंने कहा कि क्यों पाकिस्तान ने क्यों इस टाइम निकाला है, we can discuss this. अगर आप सवाल करेंगी मैं उसके बारे में बताऊंगा. जी जी. तो पाकिस्तान में 1971 की जो लिबरेशन वॉर हुई थी बांग्लादेश की, उसके बाद बहुत सारे बंगालीज भी वहाँ रहते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सब लोग जो हैं वो वहाँ पर लीगल तरीके से पहुंचे होंगे, क्योंकि अब तो वो दो अलग जो है मुल्क बन चुके हैं. पर ये जो रेसिज्म है ये सिर्फ पश्तून्स के साथ क्यों? मतलब अब तो ये पश्तून इशू बन गया है ना. अब तो जो केपीके के जो पश्तून रिहायशी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इवन हमारा पंजाब जाना मुश्किल हो रहा है, इतने शनाख्ती कार्ड और पता नहीं क्या क्या दिखाने को कहा जा रहा है. तो ये रेसिज्म जो है ये सिर्फ पश्तून्स के खिलाफ क्यों? आई नो मुहाजिरीन के साथ भी बहुत कुछ हुआ. आई मीन रेसिज्म इज अ रैम्पेंट प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, बट व्हाई पश्तून्स राइट नाउ? देखिए, इसमें एक तो बंगाली के बारे में आपको कह दूं कि जितने भी जो सो कॉल्ड बिहारी थे, जो पार्टीशन 47 के बाद जो ईस्ट पाकिस्तान चले गए थे, और दे वर नॉन बंगाली बट दे वर मुस्लिम, और 71 के बाद जो दे हैड सपोर्टेड पाकिस्तान इन द लिबरेशन वॉर, but Pakistan did not take them back. अभी भी वो refugee camps में. Pakistan refused to take them back. They took back some, and Nawaz Sharif's first term as Prime Minister, they built some houses, brought them back. But after that, they haven't. So, and also I think the UNHCR is determined that 99% of the people who are being asked to go back are Afghans. वो भी पश्तून थे ज़्यादातर. अफगान तो एक जेनरिक टर्म हो गया, but they are basically Pashtun. Now, why is this racism against Pashtun? You see, इसलिए because जब they came in waves, Pakistan has got this fear कि वहां भी पश्तून है, यहाँ भी पश्तून है. अगर ये दोनों पश्तून मिल जाएंगे तो जो NWFP और KPK का प्रोविंस है, एंड ड्यूरेंट लाइन पश्तून डू नॉट एक्सेप्ट, तालिबान डू नॉट एक्सेप्ट द ड्यूरेंट लाइन. तो आपस में इनका अगर ये यकजहती हो गई, ये मिल गए आपस में, then it will be a danger, existential danger for Pakistan. The territorial integrity will be affected. So they have deliberately provoked this attitude towards the Pashtuns, the Afghans. ये terrorists हैं, ये smugglers हैं, ये violence में believe करते हैं. So you find Sindh government and Punjab government, especially in Karachi, there is a massive amount of racial profiling. आपको याद होगा जब PTM बनी थी, PTM बनने का यही था कि एक पश्तून लड़का एक्चुअली वजीरिस्तान से था, नकीबुल्ला मसूद, उसको एनकाउंटर किलिंग कर दी थी बाय दिस famous police officer who was an encounter specialist. He was killed in cold blood because they felt कि पश्तूनों को दबा के रखना है. So that is why this reason why there is so much of animosity towards the Pashtun. अब ये unfortunately जो पंजाबी पाकिस्तानी है, he does not realize कि Pashtuns have long memories. और ये जो लोग and the manner in which they are being sent back, this is going to create so many enemies and so much of hatred
among the Pashtuns who are going back and also among the Pashtuns in Pakistan. जैसे आपने कहा, उनको पंजाब एंटर करने के लिए अपना शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ता है. They calling it visa, but they have to. So they are being checked everywhere, even though they are Pakistani citizens. और कईयों में कराची स्पेशली में ये रिपोर्ट है कि जिनके पास सिटीजनशिप कार्ड था या प्रूफ ऑफ रेजिडेंस था, तो पुलिस वाले वो कार्ड कॉन्फिस्केट करके बोलते तुम अनडॉक्यूमेंटेड हो, लाओ यू गेट आउट. So a lot of them are being pushed out even though they are documented. So people have the rising anger among the Pashtuns, the rising anger among the Taliban at the manner in which the Pashtuns and the Afghans are being sent back. तो ये सब का चुकाना पड़ेगा पाकिस्तान को. इसका जो ऋण है ना, उनको चुकाना पड़ेगा पाकिस्तान. दो वजूहात मेनली कही जा रही है, जो मतलब पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं और इंडिया में भी जो लोग अंदाजे लगा रहे हैं, उनका कहना है कि ये सब पैसे के लिए किया जा रहा है. पाकिस्तान इज मेकिंग मनी ऑफ अफगान्स जो निकल के भी जा रहे हैं अफगानिस्तान. उनको इजाजत नहीं है, शायद 50,000 रुपए रख सकते हैं वो अपने पास पाकिस्तानी रुपये. और जाहिर सी बात है, अब वो एक होमोजीनियस मिक्सचर तो है नहीं जो लोग वापस जा रहे हैं. उसमें हर तरह के लोग हैं, गरीब लोग हैं, अमीर लोग भी हैं. तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में बड़ी प्रॉपर्टीज बना रखी हैं. वो सब उनको या तो एक डिस्ट्रेस सेल वो कर रहे हैं उसकी, या तो वो छोड़ के जा रहे हैं और जो पीछे रहने वाले हैं वो खाएंगे पिएंगे. तो एक बहुत ही अजीब से तरीके से ये सब कुछ किया जा रहा है, राइट? तो इसका पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में कुछ फायदा आपको लगता है कि हो सकता है, या फिर सच में क्या ये पैसे के लिए किया जा रहा है, या फिर जो दूसरी थियोरी है कि ये तालिबान को मजा चखाने के लिए किया जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान का ये कहना है कि टीटीपी जो है वो अफगानिस्तान से अटैक्स करती है, जबकि रियलिटी ये है कि टीटीपी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है पाकिस्तान के अपने बॉर्डर्स के अंदर, राइट? एंड व्हाई डिड पाकिस्तान नॉट फोरसी दिस कि अगर कल को टीटीपी वहां से हमले करेगी भी तो अफगान तालिबान उनको नहीं रोकेंगे. दे आर एंड ऑफ द डे आइडियोलॉजिकल कजिन्स. ये दूरंदेशी पाकिस्तान की कहाँ चली गई थी जब ये पूरी अपनी अफगान स्ट्रैटेजी बना रहे थे और वहां पे कोवर्ट सपोर्ट कर रहे थे तालिबान को? आपने 2-3 सवाल किए, तो लेट मी आंसर देम द बेस्ट आई कैन. पहली बात ये है कि जो Afghan refugees, the undocumented or those who had documents, they could not do business on their own. So जिन्होंने भी कुछ किया, they had to have a Pakistani partner, even bank account, दुकान है जिसकी या कुछ. अब वो जब जाते वक्त हैं, so the Pakistani guys say, ठीक है, thank you very much. People have, Afghans are traders, so they have lent out large sums of money to Pakistanis. अब वो वापस नहीं कर रहे. किसी की 1 लाख या 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी में या दुकान में, 40-50 हजार की कौड़ियों के भाव तो बेच के भाग रहे हैं. सो बट दिस इज ओनली अ टेम्पररी फिनोमेना ना. जो भी पाकिस्तानी पैसे बनाएंगे, दिस इज अ टेम्पररी शॉर्ट टर्म थिंग, इज नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग. मोreover, पाकिस्तानी इकोनॉमी इज गोइंग टू गेट इफेक्टेड because जो the foreign minister, caretaker foreign minister said they don't contribute anything to the Pakistani economy, so it will make no difference to us. The fact is, जो undocumented या informal economy है, उसमें अफगान का बहुत बड़ा हाथ है. Running tandoor, running small shops, tea shops, working in the fields, Baluchistan में working in the mines, looking after the orchards, transport, big role in the transport. अब ये suddenly चले जाएंगे, so they are going to find it difficult in Pakistan itself. The consequences of such a large chunk of labor suddenly leaving. So ये तो एक aspect है about the and the manner they have been brutally pushed into trucks and possessions are taken away and things like that. दूसरा जो है pressure on the Taliban, that is true. You see, the reason is that is the real reason. Actually, that's also not the real. The real reason is that the Pakistan army has failed miserably to provide security to the people of Pakistan against the attacks of the people.
Number one, there's an economic crisis in Pakistan. So best as Pakistan always does is अपने problems को externalize कर देता है कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है, ये तालिबान TTP के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे. And TTP is the one which just the last 6 months make Pakistani think tanks have reported the level of violence has gone up by 80%. And in the first 9 months, about 386 security personnel have been killed, which means about 40 army, police, and paramilitary forces per month for the last 9 months. Can you imagine the level of violence for the TTP? The Prime Minister himself said, caretaker Prime Minister, in a statement, he said, since August 2021, since the Taliban came into power, violence has gone up by 60%, violence incidents, and suicide bombing by 500%. And 2,300 Pakistani people have been killed and all that. So they are using this as an excuse to cover the failure of the RV to provide security to the people and to deal with the TTP. And the economic crisis भी इनकी वजह से, क्योंकि ये स्मगलिंग करते हैं, डॉलर हमारे यहाँ जा रहे हैं, हमारा वीट वहाँ जा रहा है, and things like that. So it is basically for to cover up that. But in the process, the long-term consequences, as you said, they have not factored in. They don't realize कि इसके आगे जाके क्या repercussions होने वाले हैं. अच्छा, ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो केयरटेकर गवर्नमेंट है, सबसे पहले क्या इनके पास इतना मैंडेट भी है कि इस तरह के डिसीजंस ले सकें? और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की अगर आप न्यूज़ मीडिया पे देखें, जो डिबेट्स हो रही हैं अफगान रिफ्यूजी इशू को लेकर, उसमें बार-बार जो स्टेट का बयानिया जो रखने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हमने तो कोई जो वो 51 का रिफ्यूजी कन्वेंशन है, वो भी साइन नहीं कर रखा है, फिर 67 का जो प्रोटोकॉल है, वो भी हम उसके सिग्नेटरीज नहीं हैं, तो हमारे पे कोई जिम्मेदारी आती नहीं है. बट जितना मुझे पता है कि जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, उसके अंतर्गत आपको कुछ बेसिक चीजें होती है जिनका आपको ख्याल रखना होता है. उसके बारे में अगर आप हमें थोड़ा सा बताएं कि क्या पाकिस्तान के पास मतलब इसका कोई एक लीगल कवर है जो पाकिस्तान कर रहा है? जी, पहली बात है, तो केयरटेकर गवर्नमेंट का रोल इज लिमिटेड टू कंडक्टिंग इलेक्शन. इज अ टेम्पररी 3 months कि आप इलेक्शन कंडक्ट करें. This caretaker government was given enhanced power by the previous PDM government. The economy को, because IMF के साथ कुछ negotiations थी to reduce the next fund, so they got additional powers also to look at the economic issues, SIFC जो बनी थी and things. But this kind of a decision which impacts foreign policy, impacts relations with the neighboring country, and you're pushing on 1.7 million people. People are surprised that how can a caretaker government take this kind of a decision, which a legally elected government may not want to do. Maybe they'll adopt a different method. But इन्होंने तो अब सारे दरवाजे बंद कर दिए ना लीगल गवर्नमेंट के लिए. अब तो ये 500,000 or 400,000 people, Afghans have already left. Their lives have been totally disrupted. So ये caretaker government के इख्तियार में नहीं था. But you know, Pakistan is Pakistan. Who's going to challenge कि आप ये कर नहीं सकते थे? On the question of the Refugee Convention and Protocol, yes, Pakistan is not a member, but as you mentioned, international humanitarian law का cardinal principle है of non-refoulement, as it's called, that you cannot send a refugee back to his country where his life is threatened and where there is a danger of serious human rights violation. Everybody knows what kind of a country the Taliban, Afghanistan is under the Taliban, especially in the case of girls and women. Education rights will go. They will not be able to work. Winter is coming. Taliban themselves don't have enough wherewithal to provide food for the current population. As I mentioned, 15 million people are facing food scarcity. Not only that, the international donors have reduced assistance to Pakistan by 50%. So there is already a shortage of funds to go around. And this station, so this Pakistan is doing basically to pressurize the Taliban. See, bhaiya, agar aap, you don't look after the TTP, don't take care of the TTP, we are going to do this. We have done this. Now, but this has not stopped at this. They have also announced that they will no longer push Taliban's case at the international level. That means your recognition honi chahiye. They will not push that for Taliban. They are also troubling them
in releasing containers from Karachi port. जी अफगानिस्तान की ये प्रॉब्लम है कि they're landlocked and they're totally dependent on Karachi for transit trade. वहां पर अगर पाकिस्तान कंटेनर आपके रिलीज नहीं करता, Afghanistan will be in real trouble. Likewise, on the German border, they said कि पहले तो होता था people would show a citizenship card and Afghans would come into Pakistan and Pakistanis would go into Afghanistan. Now they said no, you can enter only on a passport with a visa. So they are now disrupting 70 साल से जो सिस्टम चल रहा है. Now they say कि अपना पासपोर्ट लेकर आओ और फिर वीजा लेकर आओ ना पाकिस्तानी एम्बेसी से. So all these things are to harass Pakistan. You see what Pakistan does not realize, or even if they do, and you mentioned कि their ideological cousins. The TTP, अभी जो TTP है, they helped the Taliban in 2001 when the US attacked. उनको पनाह दी, उनको शक्ति दी. Thereafter they fought for them against the US. Now, as per the norms of Pashtunwali, which is the code of the Pashtuns, Taliban have to provide them sanctuary and shelter when the TTP need it. They can't not give them shelter because then they will be called begarat or dishonorable, and no Pashtun can accept that kind of thing. The other practical problem for the Taliban is that if they act tough with the TTP, lots of the TTP cadres will go and join the ISKP, Islamic State, the Daesh. Their own Taliban cadres will leave them. I think, how can you do this? ये तो हमारे tribals हैं, हमारे brothers हैं, and they have given us shelter. How can you do this to them? So Taliban has a very difficult, it's stupid for Pakistan to think that the Taliban will take action, kind of action that Pakistan wants, military action against the TTP, or get rid of their shelters and send them back to Pakistan. ये नहीं होगा. So Pakistan should have factored this in and worked around it, found a way around it. ये बहुत पहले सोच लेना चाहिए था कि आप एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ डील करने में और एक मिलिटेंट ग्रुप के साथ डील करने में बहुत फर्क होता है. They will end up like militants. हाँ, सुनो जी. The problem is that they are not only militants, but Afghans are nationalists first and nationalists last. They will not show Pakistan's line. True. They were beholden to Pakistan because 20 years Pakistan provides them sanctuary. But now that they have come into their own, they have a government. They will do as Afghan nationalists. They will not do what Pakistan wants them to do, or any other country for that matter. किसी की बात की भी ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है तो हम नहीं करेंगे. आपने करना है जो करें. जी. You will recall that Mullah Omar gave up his government, refused to hand over Osama bin Laden, even to Muslim countries. He said, "No, he has sought sanctuary." बिल्कुल. उसको नानवती कहते हैं. He sought refuge with me. How can I not give him refuge? जब मेरी गवर्नमेंट जाए तो जाए. The Americans bombed the hell out of Afghanistan. Taliban left, but he stuck to his principles. What is the question of government? Here, Pakistan thinks that they can pressurize the Taliban. In fact, a former ISI chief, बड़ी अच्छा जुमला लिखा. Very good. He said, when was the last time the Afghans have succumbed to pressure? जी, मैं वही कोट करने वाली थी. असद दुरानी ने कहा था ना. असद दुरानी, हाँ. जब इनके खुद के जो स्पाई एजेंसी के चीफ ये चीज समझते हैं तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की फौज में भी सब ये चीज समझते ही होंगे. तो अभी भी अगर आप देखें ये कितना एक टैक्टिकल किस्म का, एक रुथलेस, एक नी जर्क किस्म का रिएक्शन या फिर एक फैसला लिया है पाकिस्तान की फौज ने, जिसका इनको पता है कि लॉन्ग टर्म में इसके नुकसानात जो हैं वो ज्यादा होंगे. इट विल एलियनेट द अफगान्स मोर, इट विल एलियनेट द पश्तून्स विद इन पाकिस्तान मोर. और एलियनेशन से ही तो टेररिज्म जो की शुरुआत जो है वो एलियनेशन से ही होती है, राइट? तो ऑलरेडी आपके यहाँ इतना ज्यादा एलियनेशन का मसला है. आपको पता है कि लोग बहुत ज्यादा स्टेट के अगेंस्ट हैं अभी. उसके बावजूद आप इस किस्म के नी जर्क रिएक्शंस आप दिखा रहे हैं. सो आई डोंट नो वेयर दिस कंट्री इज हेडिंग. ओके, दिस लीड्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर डू यू थिंक पाकिस्तान इज हेडिंग? भारत में कुछ लोग तो कह रहे हैं 4 टुकड़े हो जाएंगे और सब कुछ तो खुद ही हो जाएगा, हमें तो कुछ करना ही नहीं है, हम तो बैठ के देखेंगे एंड ऑल दैट.
तो थोड़ा सा बात करना चाह रही थी आपसे इमरान खान के हवाले से भी कि वो उसको जेल में डाल दिया, अब कुछ पता नहीं है कब बाहर आएगा, पर उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। अभी जो उसकी प्रेजेंट जो उसकी वाइफ है, बुशरा's former husband is getting interviewed by the Pakistani media now, and he's hell-bent on proving that Imran and Bushra had some illicit relationship, और फिर पूरा उसका कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है। फिर एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं हाजरा खान, जिन्होंने बड़ी पहले एक इमरान खान पे कोई किताब लिखी थी। दे वर इन अ रिलेशनशिप अपेरेंटली एट सम पॉइंट इन टाइम, और वो किताब आने नहीं दी गई थी, पर अब वो किताब भी रिलीज हो गई है। तो क्या इतना मजा आता है पाकिस्तान की फौज को कैरेक्टर असैसिनेशन में? वीडियोस बनाते रहते हैं, लोगों की जाती जिंदगियों में नाक घुसा के रखते हैं। ठीक है, मान लिया उसका रिलेशनशिप भी था किसी के साथ, मान लिया बुशरा के साथ भी, इट स्टार्टेड एज एन इलिसिट रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी नॉर्म्स, बट व्हाई आर दीज पीपल हेल बेंट ऑन लाइक completely destroying this man? I am convinced the Pakistan army will not allow Imran Khan to come back into power, at least for the next 4 or 5 years. Whatever is required to discredit him, disqualify him, imprison him, so everything in the book they will throw it. To make sure he doesn't contest the election, does not come back till he has paid his penance. उसको भी 4-5 साल विंटरलेस में रहना पड़ेगा, जेल में रहे या बाहर रहे. He'll have to do penance. कि आपने इतनी जरूरत कि आप लोगों ने फौज के इंस्टीट्यूशंस को अटैक किया, हमारे 14 के मेमोरियल को आपने अटैक किया, तो इसका आपको सजा तो मिलेगी. So that's why, all these things. So all this is being done whether now his party has been split. Jahangir Tareen has set up a faction in South Punjab. Pervez Khattar has set up a faction in KPK. And a lot of his people are being moved away. The electables are joining either of these two parties. So politically, judicially, morally, हर एक जो tactic हो सकती है वो कर रहे हैं. What the Pakistan army does not realize, see, like in the case of Imran Khan. आपकी आवाज आ रही है कि हम फ्रोजन? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है. अच्छा. So like they did in the case of Nawaz Sharif and Benazir, you can dismiss them, you can throw them out of power. 10 साल का आपने जिला वतन कर दिया, but उनकी जो पॉपुलैरिटी एंड वोटर बेस है वो कहीं नहीं जाता. You can't destroy that. Similarly with Imran Khan, you can imprison him, but he is become a cult figure. उसकी जो पॉपुलैरिटी और सपोर्ट है वो रहेगा. It may be eroded a little bit, but that is going to remain. Why do you think they brought Nawaz Sharif back? Because they know that Nawaz Sharif's voter base is still intact in Central Punjab, and he is the one who can, galvanize the people for a strong campaign. So politics, army officers का ये है कि आपको तो 6 years के बाद you retire and you fade away. Politicians continue, and जो उनका Ravi says this all the time. Yeah, exactly. कि आपने तो चले जाना, हम नहीं आ रहे ना. That's why his famous line, which is true. So they can try. They can use administrative measures to make sure he doesn't contest this election, or his party is, snatched from whichever side they can do it. 5 साल बाद जब Nawaz Sharif has rubbed the army the wrong way again, they'll be looking for a replacement. या फिर बिलावल को बुलाएंगे या फिर इमरान खान को बुलाएंगे. Unless and until the army pulls back from politics, stop interfering, stop this political engineering, stop trying to think that they know better, and let the politicians solve it out. अपने आप लड़े मरे. Why should the army be involved? But the army doesn't trust civilians. The problem with the army is they think these bloody civilians will run the country to the ground. अरे भाई country तो वैसे ही ground में, और कितनी ground में जाएगी? So unless and until there's no political engineering,
Political engineering happened when elections could not be held when mandated for Punjab and TPK. 90 days के बाद नेशनल तोड़ने के बाद इलेक्शन नहीं हुए. अब 8 फरवरी की डेट दी गई है. यू नॉट शो people already saying कि इसको पोस्टपोन करना चाहिए. So they're going after Imran Khan in all manners. So this Manika's statements, this lady's book, earlier videos and audios that came out of Imran Khan, disgusting stuff. इससे लोगों को फर्क नहीं पड़ने वाला. So he's a cult figure. You know, हमारे यहाँ South Asia. You really think कि इमरान को कंपेयर किया जा सकता है बेनजीर के साथ? पता नहीं, मुझे भी इमरान को लेके शुरू में ऐसा लग रहा था कि he really is a phenomenon and कुछ भी हो जाए वैसे इसके साथ बर्ताव नहीं कर पाएंगे जैसे पहले लोगों के साथ किया है. बट अब तो ऐसे लग रहा है कि जो इसके जितने फॉलोअर्स थे सब थे बहुत ही मतलब सुपरफिशियल लग रहा है सब कुछ. मतलब इतना बुरा हाल है कि इमरान खान के जो लोग केसेस लड़ रहे हैं वो कभी कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हम क्राउड फंडिंग कर लें क्या. मतलब ऐसे लग रहा है कि इमरान खान की तो जो सारी सल्तनत थी ना वो इतनी ज्यादा सुपरफिशियल थी कि हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह एकदम से नीचे गिर गई. और यू रियली थिंक कि ये बंदा जो है ये रिडीम कर सकता है अपने आप को? ही कैन मेक अ कमबैक? और even today if there is a free election or a free sort of a poll or something, he is by far the most popular leader in Pakistan. Not because of his achievements. No, today he is. But so आज के 5 साल बाद नहीं, अभी आज है, but अभी तो वो प्रोटेस्ट करने नहीं देंगे ना. And if they're not able to stall him and stop him, I'm sure the election will get postponed till they feel confident that he or his party does not come back into power. You see, judiciary in Pakistan, as you know, they are going to such contortions कि 5 साल पहले जो नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया था, उसको इम्प्रिजनमेंट दी थी, और 1 by 1 करके वो केसेस सब विड्रॉ हो रहे हैं. आई मीन जुडिशरी में क्या क्रेडिबिलिटी रही? द लास्ट पेंडिंग केस, एक तो अलजील दिया, वो तो हो जाएगा, इज दैट ही हैज बीन डिस्क्वालीफाइड फॉर लाइफ by the Supreme Court. Now the PDM tried to get around this by making an amendment in the Election Act that people disqualified under Article 62 for Sadiq or Amin wala jo tha, punishment or disqualification only for 5 years. Supreme Court said it is for life. So now there's a big debate in Pakistan among the jurists and among the lawyers. Can a legislation supersede an order of the Supreme Court, which is the guardian of the Constitution? The fact of the matter is that इसके punishment का time Constitution में भी दिया गया. So Supreme Court interpreted disqualification is for life. The Election Act says it's only for 5 years. अभी recent amendment है. तो मुझे लगता है what will happen is that Nawaz Sharif will find his nomination for the election. It will be challenged. Okay. With the Election Commission, it will land up in the High Court and ultimately land up in the Supreme Court, where they will set up a larger bench. And the larger bench will then decide that it cannot be for life and 5 years after the Election Act. That's how he will be able to participate in elections. Otherwise, if it doesn't happen, you see, I think next week, the Election Commission will announce the schedule. They require 54 days before elections can be held. 8 February है, उसके पीछे उल्टी गिनती करें. So by first week of December, Election Commission of Pakistan has to notify the election and start the process. That is, filing of nominations, scrutiny, campaigning, and all those kind of things. Agar Nawaz Sharif is not able to get released now, then he'll have to wait for a by-election. I don't think so he'll be willing to wait for a by-election. He wants to contest the general election and come into power at that time. अब एक बात तो तय है, the way he is being treated. ये पाकिस्तान में ये बात होता है, लोगों को भनक पड़ जाती है कि establishment किसके पीछे है. Everybody knows establishment is with Nawaz Sharif. So now the diplomats in Islamabad have also made a beeline to meet Nawaz Sharif. US ambassador hai, British High Commissioner hai, they're all meeting Nawaz Sharif. The NQM has now an arrangement
with Nawaz Sharif in Sindh. The BAP party, the Manzar Awami party, they've all joined Muslim League because they know that Muslim League is coming back and Nawaz Sharif is going. ठीक है, इस तरह की हवा build up हो गई है. But the downside of this is that Nawaz Sharif is also being called now a ladla, and people are saying if you have already decided कि इसको prime minister बनाना है तो election क्यों कर रहे हो? Save the country money, सीधे इसको prime minister बना लो. So that is not a very good thing. That detract from the credibility of it. ये मुझे भी यही लगता है कि जब बात करते क्यों है? नहीं, बट बात सही है, बस रुसवाई की बात है ना. यू कांट नॉट हैव एन इलेक्शन एंड मेक ए प्राइम मिनिस्टर. उसका मैंडेट क्या होगी, क्रेडिबिलिटी क्या होगी, लेजिटिमेसी क्या होगी? सो दिस इज हाउ दिस इज गोइंग अराउंड के प्राइम मिनिस्टर. पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की वैसे भी क्या ही क्रेडिबिलिटी होती है. अच्छा, ये बताएं, जो इनकी आपस में लड़ाई छिड़ गई है पीएमएलएन और पीपीपी के बीच में भी एक किस्म का भी कोल्ड वॉर चल रहा है ना, कि बैलेंस ऑफ पावर नहीं है. पीपीपी के पीछे कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ज्यादा वो खड़ी है कंपेयर टू द पीएमएलएन. तो वो ये कैसे ओवरकम करेंगे, और ये क्या आप फिर से अलग अलग होके इलेक्शंस लड़ेंगे, एंड यू नो हाउ विल इट इवेंचुअली वर्क? So this is not a cold war, this is a hot war. Bilawal Bhutto कह रहा है, he is accused them every day, comes out with the statement. But I think they are playing good cop, bad cop. Bilawal कुछ कहता है, उसके बाद ज़रदारी आके he says something else. He said Bilawal is not mature as yet. It's too soon for him. You know, he needs more training. उसने तो Bilawal को बिल्कुल उसकी बोलती बंद कर दी. Also, the PPP is jockeying for post-election coalition, not pre-election, that they will fight in Sindh. But if Nawaz Sharif does not come up with a majority of his own, he will require the support of the PPP. So they are jockeying for position post-election. But abhi to Bilawal is on the war path, there's no doubt about that. You're right. I think वो जानबूझ के थोड़ा सा आवाम को भी मिसलीड करना चाह रहे हैं कि हम साथ में हैं या नहीं हैं. वो सारे इक्वेशंस बैठा के देख रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी अ पोस्ट पोल अलायंस, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पीएमएलएन विल कम ऑन इट्स ओन. बट डू यू थिंक कि इलेक्शंस जो ये कह रहे हैं फरवरी में कह रहे हैं ना करने के लिए, हाँ, ये आपको लगता है होंगे या फिर से डिले हो जाएंगे? People have already started talking about delaying the election. मुझे लगता है कि जब तक नवाज शरीफ को पूरा रिलीफ नहीं मिलता कंटेस्ट करने के लिए, and if the army thinks that there is a chance of PTI coming back with or without Imran Khan because of their popularity, तो फिर वो पोस्टपोन करते हैं. Okay. Somehow the others they will manage and create a situation, violence है, security. आर्मी में से हम आर्मी को प्रोवाइड नहीं कर सकते इलेक्शन के लिए. So election commission of Pakistan says that we can't conduct the election. So there are things they can still do. So what are the security challenges that you see for Pakistan immediately? एक तो political stability तो है ही उनका एक मसला. Apart from that, with more and more people getting alienated against the state, अगर आप कुछ challenges define कर सकें viewers के लिए, जो आपको लगता है कि immediately पाकिस्तान को जिनको face करना पड़ सकता है because of this step of sending so many vulnerable Afghans back home. Also, मुझे लगता है कि one of the biggest challenges to Nawaz Sharif if he comes back is the polarization in the country. There is complete polarization because of the pro-Imran Khan, anti-Imran Khan. In fact, Dawn had reported this. There a 7-year-old girl came back from school and told her father कि जो supporters जिनके पेरेंट्स सपोर्ट पीएमएलएन को करते हैं वो एक तरफ बैठते हैं और जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं वो दूसरी तरफ बैठते हैं. This 7-year-old girl. God. For Pakistani society is very split down the middle. Very strong feelings. Rana Sadawallah, the former Home Minister, Interior Minister, said in a TV interview Imran Khan has created a situation, it's either him or it's us. See, the politics is the art of the possible. You can oppose your opponent, but on issues. अब जातियात तो नहीं आ जाते ना. But in this case, it has become very, very polarized. Now, in a polarized country,
How do you make policies? Unless you take the political class with you, unless you take the people with you. If 50% of the population or even more are going to oppose you just because you are from the PMLN and they are from the PTI. So I think this is a huge challenge with any government which comes, and once it comes. So if you recall his speeches in Pakistan was very conciliatory. He didn't talk about revenge. He didn't talk about what Imran Khan had done. So I think he understands the problem. But this polarization is probably the biggest challenge that he will have to. Of course, economic challenges हैं, CTP का challenge है, and so many other challenges are there. But this is also going to be one of the challenges. Polarization in Pakistan has reached dangerous levels. And then, of course, the security challenge is there because with so many Afghans being pushed out in the manner in which they are pushed out, TTP is going to have a field day in recruitment. So the ready-made लोग मिल जाएंगे, people will be queuing up to join the TTP. जी. लास्ट सवाल है मेरा ये कि अगर नवाज शरीफ बन के आ जाते हैं कल को पाकिस्तान के वजीर आजम, तो भारत में ये बड़ा एक नैरेटिव है जो प्रेडोमिनेंट है कि जो नवाज शरीफ, द शरीफ फैमिली इज बेसिकली नॉट एन आइडियोलॉजिकल फैमिली, बिजनेस ओरिएंटेड है, प्रैग्मेटिक है अपनी डीलिंग्स में, और we will not have such a tough time with the Sharif family as we had with the Imran Khan administration. To what extent do you think that is true? क्योंकि अभी ये नवाज शरीफ के दामाद ही है ना, ये जो सफदर, कैप्टन सफदर, who recently made a speech कि गजवाए हिंद तो होना ही है वो तो, and then the crowds were like screaming. तो to what extent, first of all, do you think this notion is correct that if Nawaz Sharif comes back to power, the relationship between India and Pakistan, which is kind of, not moving anywhere, it will resume in some way? दूसरी बात ये कि नवाज शरीफ अगर आ भी जाते हैं, तो how stable would his government be? This is again a question of a narrative and perception. There is no doubt that all the 3 tenures that he has been a prime minister, he has sought to establish good relations with the neighborhood, including with India. But he has not been able to do it because at that time the army was not on board. After the late Prime Minister Vajpayee's visit to Lahore, उसके बाद Kargil हो गया. So the army has not been on board. But yes, the perception is that Nawaz Sharif, because of his business background in terms of trade. But on an issue like Kashmir, after he's a Kashmiri, the family came originally from Kashmir. So he can't. There is very little flexibility for any prime minister, for any leader in Pakistan. And if you take this position that without resolving Kashmir, we cannot move ahead on any other issue, so the बात खत्म होगी, why talk? No, but ये फिर से प्रॉक्सी प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, ये फिर से प्रॉक्सी प्राइम मिनिस्टर ही रहेंगे, क्योंकि अब ये भी नोशन है ना पाकिस्तान में कि फौज ने has learned the hard way. They want to now like do not want to get too involved in the Pakistani politics, and they want to at least give that impression out कि हम involved नहीं है. So do you think ये Nawaz Sharif will be again a proxy prime minister with no real powers, or things will also change in that aspect? So here again there are 2 sort of contradictory issues. The army needs Nawaz Sharif. A, to keep Imran Khan out, and B, they realize that the precarious situation of Pakistan is such that they need somebody with maturity, somebody with experience, and somebody in the roots in Punjab who can tackle and get Pakistan out of the mess it is in. So that gives space to Nawaz Sharif to formulate his own policy. On the other side, Nawaz Sharif knows that thrice he has not been able to complete his tenure. The first time the president threw him out, the second time there was a coup, and third time it was judiciary. A fourth worry, does he want this to be his legacy? He's taken a panga with everybody and he's been thrown out, or will he complete his tenure? So he will also be treading cautiously. True. Not like his first tenure where he said, when he's a famous line of his, मैं dictation नहीं लूँगा, when he told Ghulam Shah Khan.
both ways. The army will also cut him space, and he himself would not like to confront the army. It also depends on the kind of strength that he has in the national Assembly and in Punjab. If it's a weak coalition government, then you know that he can be destabilized at any time. True. So he will also have to tread cautiously, and the army will definitely cut him space. You know, like they did with Imran Khan in 2018. और 2-3 साल तो उसको करने दिया, परफॉर्म करे यार, तो कुछ तो कर. ये सारा वही से शुरुआत तो हुई जहां से उसने कहा कि वो ISI चीफ का जो वहां पे he put his foot down, and you know ever since then things have not been okay for him. So yeah, and for the country, उसकी एक और problem थी. He thought that he was far more popular because of his popularity cult. उसको सिखाया गया था और वो megalomania and hubris. He felt कि भाई मैं तो इतना popular आदमी हूँ, I am Mr. Pakistan. Who are these generals to tell me what to do and what not to do? True. So उसकी, you know, he had a different. I don't think so. Nawaz Sharif has those pretensions. No, I mean, let me also recall that I think it was the first, you know, or maybe second, you know, there was a thing called the Sharia bill that was introduced. And Nawaz Sharif actually wanted to have this bill passed and designate himself as Amir al-Mu'mineen. So he also has that. I mean, one experience was there. I think he must have learned a lot. He must have mellowed a lot. I don't think so he'll have that. But Imran Khan was a gone case in terms of megalomaniac and taking himself as Mr. Pakistan. So, you know, a small thing. He was comparing himself to, you know, he was next to God. No, he even once, I think, drew some sort of a comparison between him and the Prophet of Islam, and that's why he was shot. वो जिस लड़के ने उसको गोली मारी थी, उसका वही reason था. He said he's committed blasphemy. So you have to, you know, be very cautious in Pakistan. But yeah, people like to learn the hard way. So आपके हिसाब से कोई ज़्यादा बदलाव हम ना expect करें, even with Nawaz Sharif? नहीं, बदलाव जैसे optics. You see, in diplomacy, the diplomats are famous by analyzing body language or optics. किसने क्या कहा? You know, in his inauguration, what does he say? Who does he invite? What are his initial things? But after a while, when you get down to hardcore negotiations and discussion, then it's a different thing. But yes, I think Imran Khan's, I mean, Nawaz Sharif's intentions will be there. We can't continue. I mean, even before that, people are, even the PDM government, people are saying, look, we have to trade with India. Our vegetables are, for example, so expensive. They're dependent on pharmaceuticals from India. वो दुबई से आके या अफगानिस्तान से होके वापस आती हैं. They're all Indian. If they trade directly, they'll save so much of money. So there is a pressure from the business community also to please trade with India. अब the cotton है, they're importing cotton now because their crop hasn't done too well. But spending so much of money on transit, they can import from India directly. Similarly, food, you know, they're importing 3 million tons of wheat. True. Or were importing 3 million tons of wheat. कोई रशिया से, पहले यूक्रेन से आता था and all that. You can easily get from India next door. So, you know, these are the kind of low-hanging fruits which Nawaz Sharif will probably pitch for. But India, we've got our fingers burnt so often. अब ये पता नहीं how we will react. That's also there. Know, and also, let's not forget, we are also having elections in May. I think things will crystallize and stabilize after elections are held in both countries. Thank you so much, Tilak ji. That's all from my side. कोई ऐसे remarks which you haven't made earlier or which you think should be your concluding remarks? I think you've been very comprehensive. You've covered a wide area. So thank you very much. A very interesting conversation. Thank you so much. Wish you all the best. The pleasure is always mine. बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, and I hope कि you know जल्दी फिर से किसी इशू पे बात होगी. Bye for today.